Good morning, everyone. Online people, clearly audible. देखा मैंने. Good morning, sir. You are clearly audible. So what was the last thing? क्या बता? FRBM issues with FRBM लिख लिए थे? लिखना था. Okay, fine. चलिए फिर start writing issues with FRBM में point number 1 undisciplined center. Undisciplined center. Center. Undisciplined union government. Center union government बात एक ही है. Undisciplined center या फिर undisciplined union government within the site down. क्रिटिसिज्म यही तो है. Within site down FRBM Act. FRBM Act has been successful. FRBM Act has been successful in disciplining. Has been successful in disciplining the state governments. The state governments. But has been unsuccessful. But has been unsuccessful in disciplining union government. In disciplining union government, full stop. This is because it is a law of the parliament. Law of the parliament, and so the parliament can amend. And so the parliament can amend the law. At will. Full stop. Next para. This is a fundamental weakness. This is a fundamental weakness in the parliamentary democracy. Fundamental weakness in the parliamentary democracy because in theory, the parliament keeps an eye on the government. In theory, the parliament keeps an eye on the government, but in real life, it is the government. It is the government which controls parliament. The government which controls the parliament because of
because of the brute majority, because of the brute, brute, because of the brute majority of the ruling party in parliament. Brute majority of the ruling party in parliament. Second point. Second point, write down. बिल्कुल लिख सकते हैं, यही तो क्रिटिसिज्म है, ये फैक्ट है, क्रिटिकल कैसे होगा? आप समझे नहीं, प्रॉब्लम बनती है जब आप किसी सरकार के खिलाफ लिखें, आप लिखें मोदी गवर्नमेंट कंट्रोल्स पार्लियामेंट, तब प्रॉब्लम बनेगा। व्हेन यू से द यूनियन गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलता सीबीआई को केज्ड पैरट स्पीकिंग द लैंग्वेज ऑफ द मास्टर। जब सुप्रीम कोर्ट कह सकता है तो आप भी कह सकते हो। क्रिटिसिज्म ऑलवेज, फिर से सुन लीजिए, क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एग्जाम इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ आंसर राइटिंग। उसमें हमेशा एक पैरा आप लिखते ही हैं क्रिटिसिज्म का, वरना आप बनेंगे कैसे? यू हैव टू राइट। उसके बाद आप सजेशन भी तो लिखोगे, व्हाट रिफॉर्म्स। देखिए यूपीएससी कभी आपको सेलेक्ट नहीं करेगी इफ यू कैन नॉट नो द क्रिटिसिज्म, बिकॉज इफ यू डू नॉट नो व्हाट इज बैड यू कैन नॉट नो व्हाट कैन बी रिफॉर्म्ड। रिफॉर्म जब आता है जब आपको पता हो प्रॉब्लम क्या है। सो अंडरस्टैंड, इफ नेवर टेक नेम्स, मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, कभी नाम मत लेना किसी का। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डिड दिस, मोदी डिड दिस, ऑलवेज से यूनियन गवर्नमेंट ब्रॉट दिस पॉलिसी। और जहां पे आपको लगे ज्यादा क्रिटिकल बन रहा है, अपना नाम लो ही मत। से स्कॉलर्स आर्ग्यू, बात समझ में आई? जहां भी आपको लगे इट इज टू क्रिटिकल, अपना नाम मत लेना। ऑलवेज राइट स्कॉलर्स आर्ग्यू दिस पॉइंट। कहानी खत्म, स्कॉलर को पकड़ लो, ठीक है? And anyway, please understand, whosoever checks your paper, they are professors. They understand this thing. Nobody is looking for a basically a pet. आप में कोई pet नहीं ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है? Administrator. You will be a tool of the state, but you must know what to reform. वरना आपका फायदा क्या है? इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि उन्हें ना पढ़ना पड़े, ठीक है? चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट राइट डाउन, इनवर्स रिलेशनशिप। यस, inverse relationship between fiscal policy, inverse relationship between fiscal policy and monetary policy. Fiscal policy and monetary policy. Monetary policy basically deals with the influence of money only. Monetary policy means increasing the money in supply or decreasing the money in supply. It does not involve printing or removing. That is a part of fiscal, which is now banned. हमने FRBA में पढ़ा था that the RBI cannot print money to finance the deficit of the government. And even on borrowing, there are limitations. 2.5% for fiscal deficit and taking to zero, minimum 0.5 to revenue deficit. So you cannot print more money and you cannot go for too much borrowing because that hurts intergenerational parity, as we have seen PIX crisis में जो हुआ था। क्लियर? लिखिए इसमें, this law puts a strict limit of 3%, a strict limit of 3% of GDP, 3% of GDP for fiscal deficit. For fiscal deficit, without exploring a scenario, where invisible hand fails, without exploring a scenario where invisible hand fails and the hand of the state is required. And the hand of the state is required. Full stop. For example, the private sector is not borrowing
Private sector is not borrowing from the banks and the government cannot borrow, and the government cannot borrow under FRBM, cannot borrow under FRBM beyond a limit. FRBM beyond a limit. Take a full stop. Now write down suggestions. Subheading. Suggestions. Suggestions में point number 1 write down parliamentary budget office. Parliamentary budget office. Within the side down, the civil society and the finance commissions. Civil society and the finance commissions has recommended office has recommended to create a separate office attached to parliament, attached to parliament to evaluate the fiscal efforts, evaluate the fiscal efforts of the union government, fiscal efforts of the union government, and report directly to the people, and report directly to the people through parliament, directly to the people through parliament. Next, write down fiscal council. Second reform, fiscal council. Fiscal council. A council consisting of second suggestion hai, a council consisting of the union and the state government officials, the union and the state government officials to take a collective decision, on fiscal responsibility. On fiscal responsibility, full stop. This will allow Sir, your this, video is not visible. अब दिख रहे हैं अश्नीत? तेल की आंखों से देखते रहे दिख जाते हम। क्या लिखा हमने? This will allow the state governments to have a say
to have a say in FRBM. To have a say in FRBM targets. Take a full stop. For example, GST Council. Full stop. For example, GST Council. GST Council में same होता है. There is a Union Finance Minister, the chairperson, State Finance Minister also present. They collectively take a decision कि GST बढ़ाना है, घटाना है, क्या करना है, and then they recommend to Parliament. The Parliament accordingly passes law, and the state government accordingly passes law. But that can only happen after the GST Council recommends. उससे पहले Parliament state कुछ नहीं करती. पहले GST Council recommends the actions, then Union and the state passes law according to the recommendations. So ऐसा कुछ लाना चाहिए. अभी क्या है? Unilateral है. The center decides and impose on the states, and states have no say. Particularly मान लेते हैं your state is not governed by your party. Let's say West Bengal. A West Bengal government wants to make different expenditure, but because your law put FRBM limits on the state government and they cannot amend this law, it's the law of the parliament. So the state government, which may have different promises, different programs, have to abide by the guidelines of the union. To at least by fiscal council, state will have a say. So they will not feel it's a unilateral burden of the union government. Clear है point सबको? अब लास्ट लिख लीजिए एनके सिंह पैनल. हेडिंग डालिए एन के सिंह, N.K.Singh. एनके सिंह पैनल on fiscal responsibility. On fiscal responsibility. Heading है ये. So NK Singh panel was appointed by the government to give recommendation on what should we do about fiscal responsibility. It gave certain recommendation which we will write, which you will write in paper as suggestions. If fiscal responsibility पे any question come, if not on fiscal responsibility, किसी भी policy पे question आता है, and you want to recommend regarding expenditure and earning, so you can put NK Singh panel's recommendation. Having said that, government of India rejected all recommendations. वो एक अलग बात है. ठीक है, पर लिख लो क्या बोला उसने. Write this down. The panel has recommended. The panel has recommended to scrap FRBM Act. To scrap FRBM Act and instead enact that and Fiscal Responsibility Act. That and Fiscal Responsibility Act. With the following targets. With the following targets. That and Fiscal Responsibility Act with the following targets. Number 1, creation of a fiscal council. Creation of a fiscal council. Number 2, नोट्स के वेरी स्टार्टिंग में हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है. अपने फिस्कल का लिटरल मतलब होता है बेसिकली द पॉलिसी ऑफ द स्टेट. स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन लिखा है फिस्कल काउंसिल का, क्योंकि पॉलिसी के लिए मनी तो लगेगा. मैंने पॉलिसी करी, मेरा इनकम कम, एक्सपेंडिचर ज्यादा, मतलब मैंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 80 करोड़ लोगों को राशन देना है, उसके लिए पैसा चाहिए. पैसा कहां से आएगा? इसलिए. हाँ, सो सेकंड पॉइंट कुछ लिखा हमने अभी तक? लिखिए. हाँ, सेकंड पॉइंट है ब्रिंग रेवेन्यू डेफिसिट. Bring revenue deficit to 0.8%.
अभी पूरा तो लिखो, अभी समझ में आएगा आपको। 2.8% बाय 2022-23 with a deviation of with a deviation of plus minus with a deviation of plus minus 0.5%, with a deviation of plus minus 0.5%. ऐसा क्यों करा गया? बिकॉज आफ्टर 2008 क्राइसिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसरिगार्डेड एफआरबीएम। क्राइसिस आया, द गवर्नमेंट हैड टू स्पेंड, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसरिगार्ड कर दिया किसे? एफआरबीएम को। सो वी हैव मेट नन ऑफ द टारगेट्स ऑफ एफआरबीएम। तो ये रिकमेंड कर रहा था कि नाउ स्टार्ट रिड्यूसिंग। मोदी गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है, आई थिंक बाय दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर बजट वी विल कम टू अराउंड 3.5। धीरे धीरे कम होगा ना, एक साथ हो नहीं सकता। तो मोदी गवर्नमेंट इज रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर, बट कोशिश कर रहे थे, बट देन यू नो अब दो प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट हैज टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर अंडर एफआरबीएम, एट द सेम टाइम इंडिया इज इन इकोनॉमिक क्राइसिस, तो गवर्नमेंट हैज टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर। हाउ टू मैच दीज टू? तो मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट इज डाइवर्टिंग मनी, इट इज डाइवर्टिंग मनी फ्रॉम अदर सेक्टर्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईएस्ट एवर एलोकेशन। वो पैसा आ कहां से रहा है? गवर्नमेंट इज नॉट वॉलेटिंग एफआरबीएम, एफआरबीएम के अकॉर्डिंगली इट इज रिड्यूसिंग, बट येट इट इज डूइंग अ हैवी एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। पर वो पैसा आएगा कहां से? ऑब्वियसली बात है, इफ आई हैव लिमिटेड मनी तो आई विल डाइवर्ट मनी फ्रॉम सम प्लेस टू अनदर। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। If you look at budget allocation percentage wise to other sector like health education, it has declined, जबकि in infrastructure it has increased. सबको समझ में आ रहा क्या हो रहा है? लिखिए सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, bring fiscal deficit to 2.5% by 2022-23. 2.5% by 2022-23, providing a deviation of 0.5%. Providing a deviation of 0.5%. Last point, bring debt to GDP ratio. Bring debt to GDP ratio to less than 60%. Debt to GDP ratio to less than 60% by 22-23. 60% by 2022-23. फुल स्टॉप। ये सारे पॉइंट हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, इसको याद नहीं आ रहा क्या? रिवाइज नहीं करता कोई घर पे है? हाँ बोलिए, आप कह रहे हैं। हाँ, रिकमेंडेशन यही होता है ना, सजेशन, माने ना माने। हाँ हाँ, देखिए रिकमेंडेशन क्या होता है? व्हाट यू फील शुड हैपन। अब हो रहा है नहीं हो रहा, उसमें हमारा क्या रोल है? रिकमेंडेशंस में व्हाट यू फील शुड हैपन। जैसे आप कहते हैं सीबीआई शुड बी ऑटोनोमस, होगी नहीं, बोलने में क्या जाता है? ऐसा वाला है, ठीक है? क्यों? हाँ सही बात है। अब वो जो भी है लिखिए, फोकस करो भाई, लिखो। लास्ट राइट डाउन रिमार्क, यस, लास्ट राइट डाउन रिमार्क, लास्ट रिमार्क लिखिए। within this write down, the government has rejected all recommendations. The government has rejected all recommendations. क्या? बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। ऑनलाइन आजकल पोर्टल चल रहा है, my government.in,
वहां पे। बाकी आप लिख के भेज सकते हैं, हमेशा से लोग लिखते आए हैं। इफ यू वांट, हाँ हाँ, वो थोड़ा गलत है। गलत इसलिए है कि आप सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इलेक्शन ईयर में आप चिट्ठी भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे लोगों को, विकसित भारत वाली। गलत है, एथिकली रॉन्ग है, बट पॉलिटिक्स में एथिक्स का कोई लेना देना होता नहीं है। चलिए एनीवे, चलिए फाइन, क्लियर है। नाउ पुट ऑन द नेक्स्ट हेडिंग, न्यू इरा ऑफ बोरोइंग। न्यू एरा ऑफ बोरोइंग, नेक्स्ट हेडिंग, न्यू एरा ऑफ बोरोइंग। सॉरी, ये हो जाएगा, दूसरा वाला खींचोगे तो। एसी चला लो ना यार, गर्मी लग रही है तो। हो गया भाई, हो गया। अब पता लगा क्यों सॉल्यूशन नहीं आते। सबके डिफरेंट ओपिनियंस है। चलिए एनीवे, ऑनलाइन पीपल, क्लियर टू यू एवरीथिंग, एनी क्वेश्चन? Clear, sir, no question. कूल। अरे ध्यान दो यार, तुम लोग क्या बोल रहे हैं। लिखिए, न्यू इरा ऑफ बोरोइंग। अब इसमें क्या है, RBI, because RBI cannot give money under FRBM. We have discussed RBI has a limitation, it cannot print money. So RBI has evolved new mechanism under RBI Act known as Ways and Mean Advance. Ways and Means Advance. इसमें एक टर्म है which we will do in next chapter, मैं आपको समझा देता हूं, something known as repo. Repo का मतलब होता है ready forward contract. Under this, if any bank goes to RBI to take some money, it gives a guarantee paper, something you call securities. In that guarantee paper, the bank says, I am taking this money, which I will return you back within maximum 7 days. वैसे usually 1 or 2 days के लिए होता है. Why it is given? To deal with temporary mismatch. What is this temporary mismatch? Because banks usually every week, आपने notice करा होगा, banks run till 8 o'clock, but it is closed for the people at 4 or 5 o'clock. Vary करता है state to state. So 4 and 5 o'clock तक they stop for the people. After that, the bank employees work within themselves. What they do? They match. Yes. They match the assets and liabilities. How much money came, how much money we lent, where we invested, where we found losses. So they are mismatching, known as asset liability matching. Let's say there is a mismatch. The bank has liability of 110 crores and it has asset of only 100 crores. So what is the mismatch here? 10 crores. अब वो पैसा आएगा कहां से? Different mechanism है. A bank can borrow from other bank, known as call money. We will do that. मैं समझा रहा हूं फिलहाल. A bank can borrow from other bank, known as call money, because it is available on a call. Where Harshad Mehta did the scam, वो call money scam था. Second, the bank can also go to RBI to borrow. If bank goes to RBI to borrow, that is known as repo. बात समझ में आया? डिटेल हम बाद में देख लेंगे. So repo में a bank goes to RBI to deal with that mismatch drama, to take money from RBI to match that. In our example, bank will go to RBI to take 10 crore rupees, so that asset and liability goes to matching status. सबको क्लियर है? एंड इट हैपेंस यूजुअली एवरी वीक, डेली भी हो सकता है, डिपेंड करता है व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द बैंक. इफ द बैंक इज रनिंग इन द स्ट्रेस, then RBI mandates you will do daily asset and liability matching. अगर बैंक इज वेरी गुड, इट इज रनिंग गुड एंड शोइंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, तो RBI कैन मैंडेट यू डू बाय एनुअली, सॉरी, यू डू बाय वीकली, वीकली और बाय वीकली या मंथली भी हो सकता है, डिपेंड करता है व्हाट काइंड ऑफ बैंक यू आर. इफ यू आर रनिंग स्मूथ तो RBI रिलैक्स कर देता है, कोई नहीं आप बाद में कर लेना. इफ यू आर नॉट रनिंग स्मूथ तो RBI कहता है डू एसेट लायबिलिटी मैचिंग एवरी डे, so that I can know every day basis पे what is your status. If there is any mismatch, you have to bridge it. How you would bridge it? Buy from somebody else, take a loan from fellow bank, take money from RBI, and if you take money from RBI, you take under repo
rates. It is an interest rate charged by RBI to give money to a bank concern. Same is charged by RBI under ways and mean advance. What happens at the starting of every financial year? State governments and union governments, they enter into negotiations with RBI. If I need money this year, how much I can borrow? So ways and mean advance means it's an advance, ways and mean advance. It's a temporary money given by RBI to the union and the state government to deal with the issue of mismatch between the income and the expenditure, which is decided beforehand every financial year. It is defined beforehand and it must be written back by the government. ये नहीं कि हमेशा के लिए, because FRBI में clearly कहता है RBI cannot give money to the government, known as monetization of deficit. RBI cannot do monetization. So what RBI does, RBI do give the money, but only for temporary basis. And that money pe RBI charge. Let's say today is the starting day of financial year. We decide, the government of India and the RBI, we decide if I need the money, I will take 1,000 crore rupees from you. But government may need, मान लेते हैं by the mid of this financial year, I need 2,000 crores. It is more than the decided amount. So RBI will charge a penalty rate. repo plus 2%. ये वेरी कर सकता है, 2% भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है. दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज द नेगोशिएशन. जनरली इतना ही होता है. सॉरी, हाँ, नहीं, बात एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग है. आरबीआई का पैसा अलग है, सरकार का पैसा अलग है. ऐसे ऐसे समझिए, यू हैव अ कंपनी. द कंपनीज प्रॉफिट इज नॉट योर प्रॉफिट. यू टेक अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट डिपेंडिंग अपॉन योर शेयर होल्डिंग. आरबीआई का प्रॉफिट आरबीआई के शेयर होल्डर्स लेते हैं. हु इज द मेजॉरिटी शेयर होल्डर? मैक्स 100% शेयर होल्डर इज गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को आरबीआई पैसा देती है आउट ऑफ द प्रॉफिट, बट एज पर आरबीआई एक्ट 1934 there is a law which has made RBI whatever profit RBI generates, because RBI gives money to a lot of people. बैंक आती है, उन्हें भी पैसा दे रही है, इधर उधर बॉन्ड्स लेती है, तो RBI generate a lot of money because RBI का खर्चा बहुत कम है. मैक्सिमम एक्सपेंडिचर ऑफ RBI is on salaries and staff. RBI का खर्चा बहुत ही कम होता है because RBI is a regulatory body. उसका खुद का खर्चा जीरो है. It earns a lot of money. It gives a part of that money to the government as per RBI Act. If government need more money, तो RBI की परमिशन लगता है. क्यों? Because RBI वो पैसा अपनी जेब में नहीं रख रहा. RBI use that money to maintain economy. Let's say there is a crisis. There is a crisis and RBI wants कि the economy has more money. कैसे आएगा money? अगर RBI पे सारा पैसा सरकार लेके बैठ जाएगी तो RBI पैसा देगा कैसे? RBI जितना प्रॉफिट कमाता है, it keeps a majority of the part with itself. That is RBI's money for economy. Personal पैसा नहीं है उसका. It is for managing the stability of economy. Let's say there is lack of money in the economy. तो RBI क्या करेगा? पैसा पुश कर देगा. इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा. If I push too much money into the economy, क्या होगा? इंटरेस्ट रेट घट जाएगा. इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग लोन ज्यादा ले लेंगे. अभी आपको घर हाउस लोन मिल रहा था 12% पे. आरबीआई ने देखा क्राइसिस आ रहा है, मुझे डिमांड बढ़ानी है, तो आरबीआई क्या करेगा? बैंकों को पैसा देगा सस्ते में, रिपो से भी सस्ते में. कहेगा ये पैसा रखो और लोगों को लोन दे दो, तो आपको वही लोन जो 12 का मिल रहा था अब आपको 5% का मिल जाएगा. तो आप लोन लेना चाहोगे. पहले आप सोचते हैं 12% मेरी औकात से बाहर है, 5 आप सोचोगे चलो ले लेता हूँ, एडजस्ट हो जाएगा. तो यू टेक मोर लोन्स. आप लोन लोगे तो जेब में तो रखोगे नहीं, यू विल इन्वेस्ट और बाय. दोनों केस में क्या होगा? डिमांड आ जाएगा. उसके लिए पर आरबीआई पे पैसा होना भी तो चाहिए. तो आरबीआई जितना प्रॉफिट कमाता है वो अपने पास रखता है अंडर आरबीआई एक्ट. उसका एक छोटा सा पार्ट सरकार को देता है, बिकॉज सरकार इज द शेयर होल्डर ऑफ आरबीआई. सबको समझ में आया? वो हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. ये तो हो गया शेयर का पार्ट. दैट इज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट. इट इज इनकम टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. रिमेंबर, रेवेन्यू रिसीट. द इनकम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सोर्सेस से आता है. टैक्सेशन एक हो गया, और एक होता है पार्ट ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. जितनी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, व्हेन दे डू बिजनेस दे अर्न प्रॉफिट एंड द पार्ट ऑफ दैट गिव्स टू गवर्नमेंट. इट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज इनकम. ये इनकम नहीं है, ये बोरोइंग है. इनकम गवर्नमेंट ऑलरेडी अकाउंट करता है बजट में. जब बजट प्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट दिखाता है मेरे को कितना पैसा किससे मिला, तो उसमें ये भी दिखाएगा मैंने कितना पैसा आरबीआई से लिया एज द पार्ट ऑफ माई प्रॉफिट. बात समझ में? ये पैसा प्रॉफिट का नहीं है, ये पैसा कैसा है?
बोरोइंग का है, when government need money in the way of the financial years. So RBI give money at repo. If government violates the pre-agreed limitation, then repo plus penalty rate, usually 2%, but remember it can vary. आरबीआई के ऊपर होता है कितना होगा, और डिपेंड करता है आरबीआई का चीफ कौन है. अगर इंडिपेंडेंट है तो ये 20 भी हो जाएगा, अगर डिपेंडेंट है तो 0 भी हो जाएगा. बात समझ में आया सबको? प्लीज राइट दिस डाउन, लिखिए. within this write down, RBI has evolved. हाँ उसी में लिखना है. RBI has evolved ways and means advance. Has evolved ways and means advance mechanism. Ways and means advance mechanism to provide monetary help to the government to deal with temporary mismatch. To deal with temporary mismatch in the cash flow. Temporary mismatch in the cash flow, comma, which must be paid. Which must be paid back within 3 months. Which must be paid back within 3 months. Full stop. Next point or next para. The limit of WMA. The limit of WMA is decided by RBI. Is decided by RBI in consultation with RBI in consultation with the government. In consultation with the government at the starting of financial year. At the starting of financial year. Full stop. Next point. The interest charged. The interest charged by the RBI is equal to the repo rate. Is equal to the repo rate. Full stop. If any government need more money than a penalty rate, of repo plus 2%. Penalty rate of repo plus 2% is imposed. Repo plus 2% is imposed. Full stop. Chaliye, fine. Done, everyone. So this is all we have about fiscal act only. अब ड्राफ्ट हाँ वही है, लेकिन अगर आप वॉयलेट करोगे लिमिट तो हमने डिसाइड किया 1000 करोड़, आपको ज्यादा चाहिए तो आपको रिपो प्लस 2 देना पड़ेगा, उससे कम चाहिए तो रिपो. हाँ आरबीआई को एक्ट में अमेंडमेंट, आरबीआई की औकात नहीं है.
सॉरी, सब नहीं, बिल्कुल नहीं, एक्ट भाई पार्लियामेंट बनाता है, आरबीआई कैसे अमेंड कर लेगा? बिल्कुल कर देगा, लेकिन उसका फायदा किसको मिलेगा? किसी को नहीं मिलेगा। अगर आपने आरबीआई को छुआ भी, इकोनॉमी गिर जाएगी। समझिए, आरबीआई इज अ रेगुलेटर, एंड इफ यू टच आरबीआई, द एंटायर इकोनॉमी रिस्पॉन्ड्स। नहीं, आरबीआई का इतना इतना आप नहीं छेड़ सकते, अंडरस्टैंड। और आरबीआई चीफ बेवकूफ नहीं बैठा हुआ है, जैसे रघुराम राजन का मैंने आपको एग्जांपल समझाया था। आप पास कर ही नहीं पाओगे उस एक्ट को, इकोनॉमी रिस्पॉन्ड करती है, आप समझिए, आप इतने ताकतवर नहीं है। इफ यू ब्रिंग एन अमेंडमेंट टू आरबीआई एक्ट, और अगर वो अच्छा नहीं हुआ, इकोनॉमी रिस्पॉन्ड करेगा। कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? प्राइवेट सेक्टर रिस्पॉन्ड करेगा, सिविल सोसाइटी रिस्पॉन्ड करेगा। इतना आसान नहीं है आरबीआई को टच करना। आरबीआई खुद रिस्पॉन्ड करेगा, आरबीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलेगा कि ये एक्ट हमें खराब लग रहा है, और अगर ऐसा उसने कर दिया, सरकार की कितनी बेइज्जती होगी। किसी कोई सरकार, अंडरस्टैंड, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन को छेड़ती हुई दिखना नहीं चाहती, खासकर इकोनॉमिक। क्योंकि आरबीआई को अगर आप टच करोगे और आरबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि ये एक्ट हमें बर्बाद करेगा या कुछ भी करेगा, आप अननेसेसरी केओस इनवाइट कर रहे हैं। अमेंडमेंट पास होना हो, आपकी बेइज्जती बहुत ज्यादा हो जाएगी, और इकोनॉमी रिस्पॉन्ड करता है उसको लेके। इतना आसान नहीं है आरबीआई को अमेंड करना। और बाकी तो देखिए, आप सीधा समझे, डिपेंड करता है ऑटोनॉमी पे। अगर उर्जिल पटेल होगा तो कुछ नहीं बोलेगा, रघुराम राजन होगा तो सब कुछ बोल देगा। आपका पॉइंट ठीक है कि इन थियरी कर सकती है, पर रियल लाइफ में अमेंडमेंट इतनी आसान नहीं है। अमेंडमेंट ला सकती है सरकार, लेकिन इतना आसान नहीं है। इकोनॉमी रिस्पॉन्ड करता है। आप आरबीआई तो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, पर इकोनॉमी तो रिस्पॉन्ड करेगा। उन्हें लगेगा अगर आरबीआई की ऑटोनॉमी कम हो रहा है। हाँ, हाँ ठीक है, वो नहीं करे। मैं मना नहीं कर रहा, आपका पॉइंट जेन्युइन है, पर मैं कह रहा हूँ इतना आसान नहीं होता है। कहना आसान होता है, इतना आसान नहीं होता। कोई की समझे, सरकार इतना रिस्क नहीं लेगी। डिमोनेटाइजेशन में उसने रिस्क ले लिया, उसकी वो माफी आज तक मांगना चाहते हैं पर बोल नहीं पाते हैं, शब्द मुंह पे आके रुक जाते हैं। लेकिन सॉरी, गिल्ट है, बिल्कुल है, क्योंकि सरकार ने एक बार भी इसके बारे में बोला नहीं है। अगर गिल्ट नहीं होता तो सरकार बोलती कि हमने देखो करा। गवर्नमेंट कभी डिमोनेटाइजेशन वर्ड नहीं लाती गलती से मुंह पे। क्या नहीं आता? चलो वो ठीक है, अपनी भी परसेप्शन है, पर समझ में आया सबको, इतना आसान नहीं है आरबीआई एक्ट रिकमेंड करना। हाँ बोलिए। बिल्कुल बोला तो मैंने, 0 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। हाँ? पूरे कहानी का समरी, तो समरी ऐसा है दैट गवर्नमेंट एज द पार्ट ऑफ फंडिंग द फिस्कल डेफिसिट कैन बोरो, but if government borrow beyond a limit, it burdens future generation, because today's borrowing is tomorrow's taxation. And we have seen the pigs crisis. If you borrow beyond a limit, you can be in a severe economic crisis, because the government has to restrain on basic necessity. People revolts. No governments want that. उसके लिए पार्लियामेंट ब्रॉट एफआरबीएम एक्ट. इट लिमिट्स बोथ स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट फ्रॉम स्पेंडिंग वे मोर थ्रू बोरोइंग. You spend as much as you want by your money, but when it's come to borrowing, FRBM acts come. But 2008 में there was a severe crisis. Government has to abandon FRBM act. Now government is trying to again come back to FRBM's target. For that there are two suggestions, because FRBM does not restrain union, and it does not have reciprocation with monetary policy. So for that, suggestion is make parliamentary budget office, so that the parliament can keep an eye on the government. Second, make a fiscal council so that the state has representation in the FRBM targets, ताकि स्टेट को भी बुरा ना लगे, सबको अच्छा लगेगा. Plus, एनके सिंह पैनल gave some recommendation which government did not agree with. ठीक है? And to deal, because FRBM Act prohibits RBI giving money to the government for monetization of deficit. उसके लिए RBI has evolved WMA. Summary clear? Clear everyone? चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए. With this our this drama is over. नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स. चैप्टर नहीं है, इसी में हेडिंग डालो, बड़ा है, लिखिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स. What is this drama called central sector schemes? देखिए, there are two kind of schemes launched by the union governments. They are known as CSS, central sector schemes, or centrally sponsored schemes. The difference is, in central sector schemes, the 100% of the money comes from the union,
In centrally sponsored schemes, a part comes from the union, a part comes from the state. What is the dispute here? Dispute ये है, for example, प्रधानमंत्री launched प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत. Mamata Banerjee does not want that Pradhan Mantri word is used for with a welfare scheme, because the people who will get advantage of Ayushman Bharat, they are likely to vote for BJP. Why would Mamata Banerjee tolerate this? So Mamata Banerjee wants to launch her own scheme for health. पर एक problem है. In central sector scheme, let's say the composition is 60-40. Generally यही होता है. But remember, it can vary. Generally 60-40 होता है. 40% of the money will come from the state's budget and 60% will come from the union. But it is not compulsory. कोई भी composition हो सकता है. Generally यही होता है. Let's say I brought Pradhan Mantri Ayushman Bharat. Ab now you have a state government, I have a central government. If you launch my scheme in your state, then of course you will contribute of your budget. It means you cannot contribute money to your scheme. भाई एक ही को तो फंड कर पाओगे आप, या तो अपनी को या मेरी को. If you fund my scheme, then you cannot fund your schemes. And why would you fund my scheme when I am a different party? Because it will give edge to me over you in state elections. So no state government, particularly the government having different party, चाहे दिल्ली हो चाहे बंगाल हो, they don't implement central government scheme with name. If central government is willing to remove the name and do not use it for political purpose, तो वो अग्री कर भी जाते हैं. But if you are calling it प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, सवाल ही नहीं होता ममता बनर्जी इंप्लीमेंट करे, political reasons. So what will happen? पर एक प्रॉब्लम है. If I do not contribute 40%, then I also do not get 60%. This is the problem. एक तो if I contribute, I lose money. Even if I do not contribute, I lose money. इसका पैसा नहीं, दो सरकार से दो तरीके से पैसा मिलता है इस राज्य को. पहला समझ लीजिए, आपने पॉलिटी में शायद करा होगा, India's financial federalism is very biased. All the taxes which give high incomes are all with center. State के पास केवल तीन है: petrol, alcohol and electricity. Petrol, alcohol and electricity. On these the taxes are imposed by the state. बाकी सब पे सेंटर के पास है. जैसे फॉर एग्जांपल आपका इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, दीज आर द हाई यील्डिंग टैक्स. सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं से मिलता है. और सारा पैसा किसके पास जाता है? सेंटर के पास. बिकॉज व्हाई वी मेड दिस सिस्टम, इफ यू रिमेंबर द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मैंने आपको समझाया था. व्हेन इंडिया स्टार्टेड एज अ स्टार्टअप इंडिया, देन अंबेडकर वांटेड अ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी. ही डिड नॉट वांट अ prime ministerial democracy, because he believed presidential democracy mein you require vote of at least 50% population, so you require vote from Dalits. But nonetheless, because we had experience of the British Empire, तो हमने सोचा prime minister continue करते हैं. But nonetheless, Indian constitution is very biased in favor of the union. एक तो reason ये था, Ambedkar's liking. Second reason था, when India started, we had a lot of problems. Lot of problems was because there were a lot of states, there were a lot of princely states, and there were insurgencies. Northeast did not want to join India. Jammu Kashmir did not want to join India. Drama was going on. वहां पे Hyderabad was drama going on. Junagadh drama was going on. So there were a lot of dramas going on. There were a lot of people who did not want to join India. Above that, South में language movement was going on. So the language movement, insurgency in Northeast, separatism in Jammu Kashmir, Hyderabad drama, Junagadh drama. Above that, the borders of India were made haphazard. As British government got more and more territory, they made the borders. So India's border was not defined. So we thought, let's have a union like a parent. It will take money from all the siblings and then will distribute money according to the needs. That was the logic. So the money is distributed by two parameters. Pehla, the central government gives fund to the state government based on the recommendation of Finance Commission. That is known as statutory transfers. Article 275. Statutory transfers or legal transfers. Every 5 years, Finance Commission is appointed. It recommends how much money from the central pool of taxes will go to the state directly. Right now, it is around 42%, it's very high. So, center 100 रुपए कमाएगा तो 42 रुपए किसे दे देगा? राज्यों को. पर अभी भी majority पैसा उसके पास है. That money center gives through schemes. को समझा, दो तरीके से मनी मिलता है. एक तो डायरेक्ट मनी गिवन बाय द सेंटर अकॉर्डिंग टू फाइनेंस कमीशन.
दूसरा, the money gives to the state, but under various schemes. There are two kinds. Central sector, where union does not give money to the state, it gives directly to the people who are the beneficiary of the scheme. Central sector is, sorry, centrally sponsored scheme. In this, center give money if state contribute their part as 60-40 ratio. If you don't contribute, then you will not get 60%. And that's the problem with the state. अब state फंस जाते हैं. If I contribute 40%, I will lose my revenue. If I don't contribute 40%, even then I will lose revenue. So both cases, I will lose revenue. Ultimately, the state government under pressure, what they do, they often participate. Unlike Delhi का केस अलग है, because Delhi has a lot of money and then spending. इसकी income ज्यादा है, खर्चा कम है. So Kejriwal can afford to say no to central sector. Because केजरीवाल के केस में क्या है, he has no problem even if center does not give the 60% part, उसे टेंशन नहीं है because it is a surplus state. So केजरीवाल has a lot of money, it can start his own scheme. State का टेंशन हो जाता है because majority of states in India runs on borrowing. They have high fiscal deficit. If they do not get money from the center, then their fiscal deficit will increase. That will violate FRBM and center will penalize them. गेम समझ में आया सबको? 3-4 प्रॉब्लम है. एक तो if I contribute 40%, I'll lose revenue on my scheme. If I don't contribute, I lose 60%, which can increase my fiscal deficit and which can ultimately lead me to violation of FRBM, and center can penalize me accordingly. तो चारों तरफ से मैं घिरा हुआ हूं. तो अल्टीमेटली स्टेट क्या करती है? दे कंट्रीब्यूट. Largely they contribute. बहुत rare होता है they don't contribute. This is a problem every chief minister face, and particularly Narendra Modi when he was chief minister of Gujarat, he was very angry over this. आपको शायद मैंने बताया भी होगा, प्लानिंग कमीशन में when meeting was going on, he was in the meeting, he went out from the meeting crying, देख लूंगा तुम्हें, and देख ही लिया उसने. The second he became prime minister, सबसे पहला काम उसने क्या करा? Abolish planning commission, because he hated this. Center is deciding everything for the state. He wanted to give more autonomy, पर ठीक है वो हाँ ऐसे ही होता है, hypocrisy politicians का नाम है. Anyway, सबको समझ में आया? अब नहीं, ऐसे स्ट्रिक्टली हम नहीं कह सकते हैं. नाम भी बदला है, कई जगहों पे काम भी बदला है. There are lot of schemes जिनके पैरामीटर्स बदले गए हैं. क्या रेशो लार्जली ही है. अब सेंटर ने क्या करा है? सेंटर हैज क्लब्ड दिस स्कीम इनटू 3 टाइप्स. पहले बहुत सारी होती थी, अब इन्हें एक नई क्लासिफिकेशन बनाई है जिसका नाम है कोर ऑफ द कोर. अभी तो आपको डबल पढ़ाया जाएगा, ठीक है. कोर ऑफ द कोर, कोर एंड ऑप्शनल. So now all the schemes of the government, central government, are classified under 3 heads: core of the core and optional. Core of the core are the scheme where existing ratio will maintain. Core schemes where you have better flexibility by the name known as flexi fund. तो मान लेते हैं I am giving 100 crore rupees to you under core. I will give you 100 crore rupees, but along with it I will give you flexibility to decide how to spend. जैसे for example आयुष्मान भारत. आयुष्मान भारत में I list 6 criteria, say for example, या 5 criteria. Anyone who satisfy these 5 criteria will join Ayushman Bharat and will get facilities. But I will give a flexi fund to the state. If a state wants, they can include any more criteria. जैसे मान लेते हैं the West Bengal government wants to include another criteria, gender. It can, but under flexi fund. So इससे फायदा क्या हुआ? I will achieve the overall objective that at least 5 criteria that I found out the central government will be obeyed. If state want, they can add any additional criteria. Last होता optional. These schemes are optional. If you want to take it, fine. If you don't want to take it, again fine. Distribution will be depending upon, अगर आप लोगे scheme तो मिलेगा, नहीं लोगे तो accordingly distribution होगा directly through finance commission. समझ में आया तीनों को? Core of the core, existing allocation will maintain. Core, you have a flexi, and optional, you have an option to choose to opt or
Not. Even if you do not opt, you will not lose money. You will get it. ये केंद्र की मर्जी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है इनमें से कौन सा आएगा, बट लार्जली एलोकेशन यही है. क्लियर सबको? कोई क्वेश्चन किसी का? क्लियर? लिखो जल्दी, स्टार्ट राइटिंग. The central government allocates money on the recommendations of finance commission. On the recommendations of finance commission, within bracket write down, currently 42%. Currently 42% of net union tax receipt. 42% of net union tax receipt, bracket close, full stop. The remaining money is allocated to the states, under various schemes. Full stop. Now put a subheading, types of schemes. Subheading, types of schemes. Within the side down, the schemes of the union are divided into two types. Number one, central sector scheme. Central sector scheme. Within the side down, these are entirely funded. These are entirely funded by the union government. Entirely funded by the union government. Full stop. For example, schemes. For example, schemes for SCs and STs. Schemes for SCs and STs. Full stop. Second, write down centrally sponsored schemes. Centrally sponsored schemes. Within the side down, these schemes have an allocation framework. Full stop. Generally it is 60-40. It is 60:40 for state governments, excluding Northeast, and Himalayan states. Excluding Northeast and Himalayan states.
comma, which have an allocation framework, of 90:10. Framework of 90:10. ठीक है, फुल स्टॉप. नोट लिख लीजिए यहाँ पे, एनओटी नोट. हिमालयन स्टेट नहीं है वो. नोट में लिखिए, दिस एलोकेशन कैन वेरी. This allocation can vary from scheme to scheme. Can vary from scheme to scheme. ठीक है, फुल स्टॉप. बट जनरली यही रहता है. ठीक है, तो यू कैन जनरली राइट डाउन दिस. स्पेशल होगा तो चेक करना पड़ेगा स्कीम कौन सी है, तब पता लगेगा क्या है. ठीक है, फुल स्टॉप. नाउ पुट अ सब हेडिंग इश्यूज. राइट डाउन इश्यूज. इश्यूज में पॉइंट नंबर 1, point number 1 write down, the state governments resent. The state governments resent, get angry. The state government resent excessive union control. Resent excessive. resent, resent, resent basically मतलब बुरा मानते हैं. resent excessive. क्या हुआ? अरे यार, हाँ, जो तुम्हें समझ में आया वो लिख लो. resent excessive union control. Resent excessive union control over central schemes. Excessive union control over central schemes. Full stop. Second point. The contribution from the state. The contribution from the state eats away. From the state eats away. हाँ, खा जाता है उसमें से. Eats away the state's capacity. Eats away the state capacity to allocate money for its own schemes. To allocate money for its own schemes. ठीक है, full stop. Now put a subheading, recent changes. Recent changes. Within this, write down, the union government has introduced a new classification. Has introduced a new classification from budget 2016-17. Budget 2016-17. Full stop. The schemes are now classified. The schemes are now classified under 3 heads. Now classified under 3 heads. Number 1, core of the core. Core of the core में write down.
these schemes will maintain their existing allocation framework. Will maintain their existing allocation framework, full stop. Take a next, write down core schemes. Core schemes write down. These schemes will maintain a framework. These schemes will maintain a framework of 60-40. Of 60-40 with flexibilities. With flexibilities under flexi fund. Flexibilities under flexi, FLEXI, under flexi fund. Last, write down optional schemes. Optional schemes. Within side down, these schemes have an allocation framework. Of 50-50. Allocation framework of 50-50 with the option for the states to invest or not. The options to the state for the states to invest or not. Full stop. ठीक है, तो this is what we have. Note में लिख लो, note flexi fund. Note flexi fund. Within the side down, it is a fund. It is a fund provided to accommodate. It is a fund provided to accommodate the diverse requirement. The diverse requirement of different states. Diverse requirement of different states. Full stop. Currently, it has been increased. It has been increased to 25%. To 25% for the states and 30%. 25% for the states and 30% for UTs. Union territories, UTs. Full stop. चलिए, अब नेक्स्ट इशू लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स. अभी कहां से टाइम हो गया? कितने बजे तक क्लास थी? हेडिंग डाल दो, वो कल कर लेंगे, लिख तो लो कम से कम. स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स. हाँ, जिसकी बिहार मांग करता है. तो बेसिकली नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, स्पेशल कैटेगरी. सैंपल यार लिख लो, गूगल कर लेना, हमसे लिखवाओगे सारा. ऐसे लिखना है तो लिख सकते हो आप. कंटेंट कम देखिए इसमें, लेकिन एक चीज याद रखिए, जितना भी हम लिख रहे हैं ये सारा अभी प्रेजेंट का है.
अगर फ्यूचर में एलोकेशन में बदलाव आते हैं या पॉलिसी में बदलाव आता है, इसीलिए इकोनॉमी में पर्टिकुलरली करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डायनेमिक टॉपिक है ये, क्योंकि हम जो भी आज लिख रहे हैं गारंटी नहीं कल वही होगा, इकोनॉमी बहुत डायनेमिक है। तो आप कैसे करेंगे अपडेट? अभी मत करना, प्रीलिम से 2-3 महीने पहले करना, क्योंकि अभी क्या बदलता रहेगा, प्रीलिम से 2-3 महीने पहले आप अपडेट करेंगे अपने फिगर्स डेटा को, क्योंकि चांसेस कि प्रीलिम्स तक बदलेगा जीरो है, इतना जल्दी नहीं बदलता है। पर अभी आप बदलोगे तो आपको 10 बार बदलना पड़ेगा। क्लियर है सबको? तो प्रीलिम से 2-3 महीने पहले बदलना। पूछिए आप। ठीक है, क्या पता है, वो तो नाम वो तो सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या नाम रखना चाहता है। आपको पसंद है तो रखो, ना मत ज्वाइन करो। अब ठीक है, पर देखिए वो तो सेंटर के ऊपर। एनीवे तो अब लास्ट हम करेंगे, कल हम करेंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। ठीक है, समझेंगे क्या ड्रामा है ये स्पेशल कैटेगरी का। हाँ, चलिए बाय बाय, देन वी विल मीट अगेन टुमारो। ऑनलाइन पीपल क्लियर? कोई क्वेश्चन है आपका? नीट क्लियर है सारा? Sir, one question. हाँ जी बोलिए। Sir, Modi deconstructed the Babri Masjid, but then why is he like deconstructing some gurdwaras in India? Why he is deconstructing? Yes, sir, he demolished some gurdwaras. तो वो तो बहुत कुछ डिमोलिश हुआ है, गुरुद्वारा हुए हैं, टेम्पल्स डिमोलिश हुए हैं। आपको अगर पता हो मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद से देयर आर मोर टेम्पल्स व्हिच हैज बीन डिमोलिश्ड देन मॉस्क। रीजन बीइंग, जैसे फॉर एग्जांपल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अगर आप उसकी डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, जितने टेम्पल्स डिमोलिश किए गए हैं काशी विश्वनाथ के चक्कर में, उतने पूरे इतिहास में कभी नहीं हुए होंगे। बिकॉज वो कॉरिडोर बनाने के लिए आपको बहुत कुछ डिमोलिश करना पड़ा, और बहुत से छोटे छोटे टेम्पल्स थे, क्योंकि आप अगर काशी गए हो कभी तो वहां पे क्या है, छोटी छोटी गलियां हैं और उसमें बहुत छोटे छोटे टेम्पल, और बहुत प्राचीन है वो, उन्हें डिमोलिश करना पड़ा ना, इसीलिए सुंदर ज्यादा थे वो, उन्हें डिमोलिश करना पड़ा, कॉरिडोर बनाना था। तो अंडरस्टैंड, ऐसा कुछ नहीं, अंडरस्टैंड दिस गवर्नमेंट इज न्यूलिबरल, रिलीजन इज यूज्ड, बिकॉज न्यूलिबरलिज्म अपील नहीं कर पाएगा। बाकी ऐसा कोई पर्सनल वेंडेटा है नहीं किसी का। ठीक है स्नीत? हाँ बोलो। Okay, sir. चलो ठीक है, एक क्लास जरा ओवर कर दे। ठीक है, हेलो बाय सर। बाय, देन वी विल मीट अगेन टुमारो।